आ रहा है सर। ओके, तो स्टोरी लिखनी है। फर्स्ट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है नाम। नाम आप लोग आपका लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे। रोल नंबर आपके मन से कुछ भी डाल दोगे टेम्पररी। चेस्ट नंबर आपके मन से कुछ भी एंटर करोगे, बैच नंबर डालोगे। पिक्चर देखने के बाद में 30 सेकंड रहेंगे आपको, तो इस ब्लॉक के अंदर आप लोग कैरेक्टर्स लिखोगे। कैरेक्टर्स के लिए ओवल्स बनाओगे। लीड कैरेक्टर जो भी होगा उसके लिए एक कैपिटल ओवल रहेगा। बाकी जो जो दूसरे कैरेक्टर्स होंगे जो सिर्फ स्टोरी में कोऑपरेटिव से को पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए छोटे ओवल्स बनाओगे। मेल होगा तो आप एम लिखोगे, फीमेल होगा तो आप एफ लिखोगे। उसकी एज उसके नीचे लिखोगे, उसके नीचे उसका साइन लगाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये उसका मूड शो होता है, वो पॉजिटिव मूड में है कि नेगेटिव मूड में है, प्लस और माइनस। तो एक्शन में जो है, एक्शन में आप लोग क्या लिखोगे, शीर्षक मीन्स स्टोरी का जो टाइटल है वो। ओके, और वो हर एक का सेपरेट आना चाहिए, किसी का सेम नहीं, कोशिश करें। सबका टाइटल सेपरेट होना चाहिए, सेम नहीं। रेयर कंडीशन में एक जैसा हो सकता है, बट स्टोरी तो सेम नहीं बनेगी, स्टोरी तो सेपरेट ही होना है। ओके, यस सर। और जब आप एंडिंग में पहुंच जाओगे उस एक्शन में क्या एक्शन में स्टोरी का टाइटल, जैसे वो मैंने आपको अभी पिक्चर बताया था स्क्रीन के ऊपर, सपोज ये एक पिक्चर बताया मैंने, तो इसके अंदर इस स्टोरी का टाइटल क्या बनेगा, कोई बता पाएगा? एक्शन। हेलो, हाँ सर, क्या बताना है आपने बोला? इसका एक्शन क्या बनेगा, टाइटल क्या बनेगा इस पिक्चर का, स्टोरी टू का? बॉयज एंड हाँ, सेव ट्री। सेवट्री। बैड हैबिट्स एंड ऑल गुड थिंग। हाँ, ऐसा कुछ। गुड। क्या सर? हाउ टू प्रिवेंट योर बैड हैबिट्स। हाँ, मैं भी वही बोलने वाला था। ऐसे कोई टॉपिक जिससे एक मोटिवेशन और पूरी स्टोरी उसके अंदर छुपी हो, उसको बोला जाता है टाइटल्स। ओके, यस सर। ओके, तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाऊंगा। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता चल गए? यस सर। यस सर। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे शेयर करोगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही ग्रुप में, तो व्हाट्सएप पे शेयर करूंगे जैसे आपको स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। टाइम लिमिट का ध्यान रखिए, 30 सेकेंड आप लोगों को स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाएगी। 30 सेकेंड। रितेश, 30 सेकेंड आप लोगों को स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी। 30 सेकेंड में आपको उसको याद करना है, और 4 मिनट्स मिलेंगे आपको स्टोरी राइटिंग के लिए। 4 मिनट में आपको डायग्राम स्टोरी पूरा कंप्लीट करना है। लेस देन होना चाहिए 100, या 100 से ज्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, और मोर देन होना चाहिए 80। सर, हेलो, सर आप जितने पिक्चर सेंड करोगे उस पे पूरी एक स्टोरी बननी चाहिए। नहीं नहीं, एक ही पिक्चर बताने वाला हूँ मैं, उसी के ऊपर आपको स्टोरी बनानी है। हाँ 4 मिनट में, ओनली 4 मिनट यू विल गेट। सर ओके सर। सर हाँ सर पेज पर लिखनी है क्या एक? हाँ, पेज पे। ठीक है सर। मैंने फॉर्मेट सेंड किया था, आप लोग ड्रॉ किया होगा तो अच्छी बात है, या ड्रॉ करना किसी का बाकी होगा तो मैं थोड़ा टाइम और दे देता हूँ। नहीं सर, स्टार्ट करा। सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों का शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, और उसके कैनवस के ऊपर स्क्रीनिंग रखेंगे। ओ सर, सर स्टार्ट बैच करा। नंबर 3 डालना है ना? 4 मिनट मिलेंगे आपको स्टोरी सेंड करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे। 4 मिनट के अंदर आपकी स्टोरी मेरे पास में होना चाहिए, कोशिश करें, क्योंकि एनडीए में आपको ओनली 4 मिनट्स मिलते हैं। सर ज्यादा टाइम लगा कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको 4 मिनट में कोशिश करना है। सर हाँ एनडीए पेपर पास आउट होने के बाद जो एंट्रेंस रहती है 5 डेज की, हाँ उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? हाँ, ये ऐसे ही रहता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एक इवेंट है उसमें। और सर, बैच नंबर क्या लिखना है इसमें? बैच नंबर आपके मन से, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर आप लोगों के मन से लिखोगे, क्योंकि आप लोग जब एनडीए के लिए या एकेडमी में रहोगे तो लगे तो मैं आपसे आपको एक डिफॉल्ट आप लोगों को बना के दे दूंगा मैनुअली, या आपको असाइन कर दूंगा नंबर्स। वो सर। यस आर्यन, स्टार्ट करायचं आहे? हा ना. आता नवीन मुलं आहे, त्यांना माहिती नाही आहे, तुम्ही जुने आहात. नाहीतरी असं समजणार नाही ते. नहीं तिकडे नहीं, झाल्यावर समझ लो त्यांना। आप सबको समझ में आया?
शार्दुल आर्यन जो है Yes, आप sir. लोगों के सीनियर्स Yes, है सेशन। यस सर, समझ में आया सर। ओके, तो स्टोरी टाइम। सर वो सर्कल तीन ही निकलने का? नहीं, सर्कल आप लोग कितने कैरेक्टर देख पा रहे हो उस हिसाब से सर्कल बनाओगे आप। लीड कैरेक्टर को जो मीन्स उसमें शीर्षक है, अभी वो आपको एक इमेज जो दिखाई थी उसके अंदर वो शीर्षक जो डिसिप्लिन सिखाने वाला कौन था उसमें, वो फार्मर था। तो फार्मर कौन हो गया, उसका मेन लीड करने वाला। ओके, और पूरी स्टोरी उसी के बेसिस पे रहेंगी ना, क्योंकि जो स्टोरी के बारे में बताएंगे आपको, जो स्टोरी में ज्यादा उसका मेन रोल होगा उसका आप ओवल जो है वो कैपिटल बनाओगे। ओके, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन उसी पे ही देना है ना ज्यादातर, और बाकियों को तो आप गिना चुना आप उनको यूज करोगे उस स्टोरी में। ओके, हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। यस सर। यस सर। तो इमेज आपके स्क्रीन पे। सर, हाँ, हाँ आपने जो अभी इमेज दिखाई थी ना उस पे स्टोरी बनानी क्या है? नहीं उस पे नहीं, हाँ, मैं दूसरी इमेज दिखाने वाला हूँ। वो ऐसा डेमो दिया था मैंने। कभी दिया था? हाँ, वो तो इमेज है, वो तो क्लियर थी, उससे भी ब्लर इमेज आती है एनडीए के अंदर। तो वो तो एक बार आपको प्रॉपर वे से दिख रही थी। सीडीएस और एनडीए गर्ल्स के लिए सीडीएस होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। एनडीए की गर्ल्स एलिजिबल नहीं होती, बट सीडीएस के लिए एलिजिबल है। ठीक है। सर कितने मार्क्स का है ये? सर स्क्रीनिंग टेस्ट में डिस्कशन होगा क्या? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी। आप लोग मेरे को इमेजेस भेजने के बाद में फोटो खींच के भेजना आपको व्हाट्सएप पे मेरे। ओके सर। हेलो सर, हाँ, ये मार्क्स कितने हैं? इसमें वेटेज कितना है मार्क्स का? मार्क्स का वेटेज, ये हाँ सर। आपकी स्टोरी राइटिंग होगा 50 मार्क्स का। उसके बाद में वो स्टोरी को आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो उसके अंदर मार्क्स वेरी होंगे। ओके, 15? आपने 15 मार्क्स बोला? नहीं 50। ओके सर। 50 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपके मार्क्स वेरी होंगे, बढ़ेंगे कब, जब आप उसके ऊपर स्टोरी आप जब आपका व्हाट्सएप पे मेरे पास में रिसीव हो जाएगा इमेज, तो उसके बाद में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और ज़्यादा। उसके ऊपर आपको स्टोरी मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे से देना है। ओके, ओके सर। ओके सर। ओपन। ओके, स्क्रीन पे आपकी इमेज। थर्टी सेकेंड तक 1 2 3, ओनली 30 सेकेंड्स। जल्दी से लर्न कर लीजिए इमेज। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30, ओके, डिसअपियर। चलो फटाक से स्टोरी राइट कीजिए, 4 मिनट। सर हाँ एक प्रश्न विचारू का? हाँ, सर आता तुम्ही 30 सेकंडचं दिलेलं आहे. हा, आता कोणी कोणी स्क्रीनशॉट काढून घेतले असतील तर काय सर? आता ते ऑनलाईन मध्ये आता त्यांनी ट्रिक्स घेतली त्यांची, आता ज्याच्या डोक्यात नाही आलं ते गेले. तू गप बस ना. बरोबर आहे सर. टाइमर अपने हिसाब से लगाओगे, 4 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करोगे आप लोग। मुझे 4 मिनट्स में व्हाट्सएप पे होना है अंदर अंदर। एनडीए में आप लोगों को एक्चुअली 4 मिनट्स ही मिलना है स्टोरी राइटिंग के लिए। सर तो फोटोज नाही कळालं. सर हाँ, सर दूसरा इमेज सर तो दिखाओ, फोटोज दूसरा. नाही कळालं काय. हाँ सर, तुम्ही दूसरा मेसेज इमेज दिखाओ. एकमेकांकडे बघताय काय कळलं? मेसेज टाकत होते ना तेव्हा करत. आप लोगों के सीनियर से वो थोड़ा मस्तीखोर है। हंड्रेड वर्ड्स आप कोशिश कीजिए। वैसे देखा जाए तो 80 से ज्यादा होना चाहिए, रूल बोलते हैं। और बट आप 100 लेके चलिए टारगेट। व्हाट्सअप आप लोगों के स्क्रीन पे दिखने वाला है, किसने सबमिट कर रहा है कौन नहीं, इमीडिएट।
किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक? फास्ट। हाँ, पर्सनली सेंड करना है मुझे। फोर मिनट्स और हो चुके हैं, अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया। ओके, 1 मिनट मेरे तरफ से एक्स्ट्रा फोटो अगर क्लिक करना हो तो 2:36 तक मेरे व्हाट्सएप पे होना चाहिए। गुड। चंद्रशेखर, आर्यन और फास्ट। आर्यन और चंद्रशेखर के मैसेजेस आए मुझे। ओके, चंद्रशेखर का नहीं आया। फास्ट सिर्फ आर्यन का आया है। आपके सीनियर ने ही किया सबमिट विद इन 4 मिनट। ओके, वेबो ने भी सेंड किया। गुड। और कौन? साहिल ने सेंड किया है, आप लोगों के सीनियर है साहिल भी। गुड साहिल। उसके बाद में अभिषेक महाले ने सेंड किया। अभिषेक, फोटो ब्लैंक है। फोटो में कुछ नहीं दिख रहा। गुड। रामेश्वर ने सेंड किया। फिर उसके बाद में आशुतोष सोरना ने सेंड किया। जो लेट आए हैं उनको मैं थोड़ा बाद में और बता दूंगा इमेज क्या था क्या नहीं, बट इवेंट के लिए आप लेट हो चुके हो। और तब भी आप लोग पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्टोरी सब रीड करने वाले हो, सब अपने अपनी स्टोरीज जिन्होंने सेंड की है मुझे। अभिषेक सुभाष देवकर ने सेंड किया। रितेश टाकावड़े ने सेंड किया। यहाँ 30 पार्टिसिपेंट है, इतने कम इमेज कैसे? ओके दानेश। Okay, I will inform Rishikesh. Sorry, Rameshwar. सजित कुमार ने भी सेंड किया अभी।
एनीवन? दानेश? ओके। ऋषिकेश तुपे ने भी सेंड किया है। ओके कल्याण। देखा दानेश फोटो आपका, आपने क्या सेंड किया है? बट ब्लैंक आया, वो स्टोरी नहीं है उसमें। हो गया? 31 पार्टिसिपेंट है। ओके दानेश, बरोबर आता रिसीव झाला। ओके नकुल। बघितलं दानेश, फोटो बघितलं। मी मोबाईल वरती बघतोय, इथं नाही बघत आहे। इथं फक्त तुमचे नाव दाखवतंय कोणाकोणाचे आले। Don't type Danesh anything. Others students seeing that. आपका मैथ्स का पेपर आ गया 11th स्टैंडर्ड। आपका मैथ्स का पेपर आ रहा है यशवंत सर के पास से। किसी को होना है? शाम को मैथ्स का पेपर है आप लोगों का। वैभव सारे ने भी सेंड किया फिर से कुछ और। यस रितेश, आपका फोटो मैंने देखा। मैं मोबाइल में देख रहा हूँ सबके इमेजेस ओपन करके। हाँ देखा। वैभव आपका भी देखा मैंने फोटो। फोटो सभी के देख पा रहा हूँ मैं। चैतन्य आहिरे ने भी सेंड किया अभी। दानेश, फिजिक्स का पेपर मैं मन से बनाने वाला हूँ। मैथ्स का पेपर क्वेश्चन पेपर मेरे पास में सर के पास से आए। आप लोगों के सीनियर का आज फिजिक्स का पेपर है। ओके आयुष, आपका फोटो मिल गया है मुझे। साहिल का भी मिल गया। साहिल बाय नहीं, अभी कंटिन्यू रहो, थोड़ा और बाकी है। और ऋषिकेश तुपे ने और फोटो सेंड किया। ओके ये किसी को देखना है? मैथ्स का पेपर है बाद में। चंद्रशेखर रेवनकर का भी आया।
आप लोगों के सीनियर है चंद्रशेखर भी। दानेश मैसेजेस नको करू। रितेश रितेश उधर से मैसेज, इधर सेशन में नहीं हो रहे थे आप, वो ऐसे कर रहे हो मैसेजेस। ओके हो गया सभी का, फिनिश करें। नकुल आपका आया नहीं। चंद्रशेखर मैं सेट करने वाला फिजिक्स का पेपर आप लोगों का। ओके चंद्रशेखर रितेश, मैंने चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोला है। हो गया। अभी मैसेज खोलता ही नहीं, कैसे पता चलेगा कौन क्या लिख रहा है। ओके अब लिखो। और किसी के हैं? कंप्लीट। ओके मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। सभी का पेपर हो गया सबमिट? यस सर। ओके वन बाय वन में नेम कॉल करूंगा, अपनी अपनी स्टोरीज बतानी है। ओके हेलो। उसके बाद स्क्रीनिंग होने वाली है, जिसने पिक्चर्स भेजी उनको उनको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद में उसके ऊपर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपको बढ़ाने हो तो। सर माझं आलं का? तनिष्क आलं. आलं। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। यस सर। कोई कुछ बोल रहा था, कल्याण आप कुछ बोल रहे थे? सर आपका फोन नंबर दीजिए ना। मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास में, ग्रुप में आप लोगों को मैसेज मेरे नंबर से आते हैं। सर मैं अभी ऐड हुआ हूँ। ओके चैट में भेज रहा हूँ मैं। चैट सेक्शन में डालिए जरा। 827
ओके वैसे आप लोगों को जब आप मेरे को रिप्लाई करते हो तो आप लोगों को मेरा नंबर भी जाता है डिफॉल्ट, फर्स्ट टाइम अगर मैसेज किया होगा या कुछ 14 डेज के बाद में ग्रीटिंग मैसेज ये आता है। हाँ सर, बिजनेस अकाउंट के सर यस आपने जो अभी चैट पे नंबर डाला वो आपका है? हाँ मेरा ही है। ठीक है। चलो स्टोरी रीडिंग शुरू करवाते हैं, बाकियों के पेपर्स आते रहेंगे। ओके चैट बंद कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ओके वन बाय वन। फर्स्ट कौन? आयुष। हेलो आयुष श्रीवास्तव। ओके सर, थैंक यू सर। ओके आपका इमेज में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। सर मेरा नंबर मेरे फादर के मतलब नाम से आ रहा होगा। ओके 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 आपने उस पर सेंड किया है क्या? यस सर, मेरे फादर के से किए। नंबर पे आपने सेंड किया है क्या? नहीं पापा के नंबर पे सेंड किया आपने। सर फादर का नाम मेरा सुजीत कुमार है। नहीं आप रिप्लाई कीजिए एक बार व्हाट्सएप पे पापा के मोबाइल से। कर दिया सर। ओके ओके आपकी स्टोरी। आस्था डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद एनडीए पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नेम आयुष श्रीवास्तव, रोल नंबर 45, चेस्ट नंबर 554, बैच नंबर 84। ओके एक्शन आपने एक्शन नहीं लिखा आयुष। सर मुझे समझ में नहीं आया क्या था वो। ओके कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में 2 है, मेन कैरेक्टर शायद। यस सर। कुछ बताओगे आप आपकी स्टोरी के बारे में? सर इंग्लिश में बोलने की हिंदी में? which you are able to feel as a comfort. Yes, so this is a story about a conductor who was like 37 years old and had reached out to a child who was just 5 years old. When he asked, "Where are your parents, child?" The boy was just fumbling and crying. And he said, "Sir, I have no parents." Ayush, your voice not coming proper. Okay, sir, I'll try switching to my device. Just a minute, I'm coming back. Okay, or either I will read it for you. Okay, sir. There is a male character whose age is 37, na? Yes, sir. Okay, and another male character whose age is 5 years old. There is a story in the story. There is a conductor who was a 37-year-old had reached out to a child who was 5 years old. When he asked, "Where are your parents?" child what they are, I don't know. Then they started crying. Okay, what actually that day? Then they started crying.
Then the boy started crying, and you can speak. I am not able to read that properly. What, sir? Shardul, Sir, don't which laugh. one? You have to be ideal for your juniors. Sorry, sir. Okay, okay. Ayush, Yes, sir. Hello. yes, Ayush. Sir, what do I have to read? Read the story, complete the story. Okay, sir. This story is about a conductor who was 37 years old and reached out to a child who was just 5 years old. When he asked where are the parents today, the boy started crying, and by falling, he said, I have no parents. The conductor was devastated, and he started talking to him and admiring him, as he was just a 5-year-old kid coming on his own to go from the bus. The other people was just minding their own business, but they did not pay attention to the child, in spite of being near him. The conductor paid the child's fees and sent him to an orphanage. Moral: always be considerate and help others when they are in need, as they might help you when you are in need. Okay. Moral: always be considerate and help others when they are in need, as they might help you when you are in the need. Okay. You can write action as you are able to, I think, write the action as a good conductor. Sir, I like his story, sir. Okay. Good. Senior I also like his appreciate moral. your story, Ayush. Sir, my story was okay. Yes. Your story is a positive, means it's showing helpful nature of the conductor who helping that child who tried to do help, and it's a good to help someone, and you representing that in your story. Good, that one. Thank you, sir. Next one. Next one is here, Rameshwar. I'm able to see your name in the order, second order, in the order of second person on my. Yes. Rameshwar, go ahead. Yes, sir. Reply on your number, Rameshwar. Yes, sir. Reply on the WhatsApp. Okay, I got that. This was your story, na? Yes, sir. Okay. Name Rameshwar Ashok Jadhav, batch number 3, chest number 15. Action is what that? Inquiring Inquiring the alone child. the alone child. Okay, inquiring the alone child. Good. And characters. There are two characters. As the elder and the means there are two characters, which one the younger than the elder one. The first one was Okay. 24 years and the second one of 4 years. Okay. So my story starts from that there are two persons, firstly of 24 years and secondly of 4 years. The elder one were asking something to the child, maybe his location where he live. They were no on the bus stop where the elder person was inquiring about him as he was alone. They both were happy and the younger was watching the elder one by seeing up and elder was watching him by bending down. Hello. Okay. Yes, sir. Your story also nice. You are also showing the kind behavior of that person. You are not giving any designation to him. Hello, Rameshwar. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you are just speaking with the elder and the child. Yes, sir. Okay. Helping is a nature.
You also have to locate the uniform. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rameshwar, how many words that they are? So approx 70 to 80. Not 80 might be. You have to write more than 80 words in the story. You should be. Sir, Yes, let I it will be try hit next right time. first only. Yeah, I know that. It's let it be. But if you are facing the NDA, then you have to write more than 80 words. Okay? Okay, sir. Okay. You sent me on the time, I think that's why this is happening. Yes, you try to submit it earlier. You're near, but a little bit you have to boost your writing power. Okay, Rameshwar? Yes, sir. Okay. Your story was nice. Just showing caring of a child. Good to see that. Actually, story also have a marks, huh? When you're writing a story, it should be in a 80 or more than 80. Okay, next one. But story is nice, and the writing of this type of a story is good. Okay. Shardul. Shardul, where is your story? Shardul. Shardul. Hello. Shardul. Okay. Phone is hang. Who is the next one? Rishikesh Tupe. Rishikesh Tupe. Yes, sir. Okay. You are late for sending the story. It should be on the 236 or 237. Okay, no, don't worry. But you submitted it. Tell about your story, Rishikesh Tupe. Sir, firstly, I will introduce my characters. There are three characters. First one is a boy of 9 years old, and second one is a man of 32-year-old. He is a father of that boy, and third person is a man of 28-year-old who is a police inspector. And my action means title is different mindsets of the child. So story starts like, once upon a time there was a boy of 9-year-old. He used to watch the movies every day, due to which he had made his mind that the policemen were very strict, and then
And then one day his father take him to the rally in which there was two policemen. Uh, Firstly, he afraid to go there, but after some time, the newly joined policeman come near to him and said that why are you afraid of us? We are here to protect you, not to harm you. So don't afraid from us. And then he gave a flower to him and said that he should not afraid from us. And the boy who has the bad mindset about the police was changed, and he was friendly towards the policeman. Okay. No issue, Webo. Okay, Rishikesh, your story is also nice. You wrote so much thing, more than 80 words you wrote, or more than 100. Okay. In short, what is the action of your story? So my action of story is different mindset of the child. Different mindset of the child, but you are not written. Sir, in second photo. In second photo. Okay. Different mindset of the child. It is helpful. Hello. Yes, sir. What, sir? It is helpful. Hello. Sir, I didn't understand. The which story you wrote that is helpful. In short, you can tell. Rishikesh. Hello. Sir, yes, sir. It is helpful for everyone. Like the small childs are afraid of policemen. Actually, this happens towards few children, and we all know they are here to protect us, not to harm us. So from my thinking, it is helpful for us. Okay. Good. Next one, who? Rishikesh Tope, your story is also nice. You are showing different mindset of the child in your story. Next one. Vaibhav Bhusare. Okay. Vaibhav. Vaibhav, it doesn't matter which are the character in your story, a male or a female, because that image is blur. Okay. Okay, sir. There is a two character, one of 35 years and one child of 3 years. The action of my story is silence in your situation. Hello. Silence in your situation. Okay. Yeah. There is a one female of age of 35 years and one child of 3 years, and the situation of the city was very difficult. Child of 3 years in the trouble, and his parents has lost due to some problem due to the attack of the terrorist. The armed female see the child see the child on a road, and she run to him or her and asks her in the situation. After her aim was to save the child and take safe to her parents, and the task has completed of her female
female officer and the parent and sorry, the completed offer and parents got to her child, they were happy. Okay. And parents get this child, they were happy. In short, what is your story? Hello. In short, the child was in the trouble, and that officer came and save him. He was in trouble because his parents had lost, and he asked him, "Where are your parents?" He was 3 years old. He has no idea about the situation. After some time, she take to her to their to his parents, and the parents got their child, and they were happy. Okay. The And task of the officer has completed to take him to safe to the home. And action of my story is silence in your situation. okay, what is silence then? Silence in your situation म्हणजे घाबरू नका जाऊ तुमच्या सिच्युएशन मध्ये. सायलेन्स, काम राहा, काम. Okay. Means relax. रिलॅक्स राहा, मग मार्ग निघतील बरोबर असं म्हणून. Okay, good Vaibhav. It also nice. Okay sir, thanks sir. Okay. Whenever you are shying with something, you are losing yourself. That's why try to don't shy ever. Okay. Yes sir. Who is the next one now? Nakul. Nakul. Yes, sir. Okay, go ahead. Where's your story? Hello. Hello. Nakul. Yes, sir. Where is your story? Sir, I have a text it. You wrote that? Wait. Okay, next one. मला चेक करशील तेव्हा मला ओपनच नाही करत आहे तो. Done. Ritesh, up to till we will conduct the Ritesh story. Good. It's more than 100. Ritesh. Hello. Yes, sir. Tell me. Tell about of your story to others. Sir, this story consists of 3 main characters. First character is of policeman, second character is of the small boy, and another third character is of the civil man standing beside the small boy. There is a large function in the city, and so small boy is enjoying that function, and that at that time policeman come there and ask that boy about his family, and that boy also responds him very nicely, and also by seeing the policeman, the boy is very happy, and the civil man beside the boy observes that small boy, and by observing that boy he also feels very good, and because of this small boy they both were happy.
Okay. What is the title of your, means what is the action of your story? Sir, good boys always keeps all happy. Everybody happy. Okay. And in short, how you will indicate with that to your story? Sir, we should be kind with everybody and always smile, keep smile on our face, due to which others will also be happy with us. Good that. Okay. It's also nice. Ditesh is your senior. He's from class 12. Okay. And you wrote it in within 4 minutes. Good, Ritesh. And so much words you write. I think it's more than 80 or 100. It is 100 perfect. Okay. Next one. Who is he? Manish. Okay. Manish, go ahead. Sir, in my story, there are two characters. One is female and one is small boy, aged 4 years. Female is mother of that small boy. Okay. Action, the life of police officer. It was a summer day. Summer means it's season of traveling. Crowd clearly shows that everyone wants to travel their native places, and few of them wanted to enjoy water parks in this hot summer. But small boy asking his on-duty police mother that when we are going to go at our native place. His mother smiled and replied, "Not now, but soon I will take you to your siblings and we will enjoy a lot." After hearing this, boy smiled and was so eager to meet his siblings. But vacation went on, but he could not meet his sibling because of his mother's duty. Moral: so start caring about police and army men who protect you and stay away from family. Okay. Good, Manish. Manish is from Bhosla, but he wanted to join Asta. Due to some document issue, he is not able to join Asta. Otherwise, he will be your senior in our academy also. His intention to join Asta. Okay, Manish, in short, you can explain your action. Sir, means all our police officers and army men are protecting us from, means staying away from their family and protecting us, and we don't care about them. So we should start caring about them and try to help them too. Okay, good. That's a good spirit you are showing in your story. Okay, next one. Sahil. Sahil, are you in the session? Sahil Naik. He's also your senior student. Sahil Naik. Okay, action is celebration after World War. I think story was interesting. Ritesh, where is Sahil? Yes, sir. There is a Sahil. He's not in the session, might be. Yes, sir. Yes, sir. He left the meeting. Okay, but a title is very good. Celebration after World War. Sir,
After World War, soldiers came out to their homes and their families are waiting for them. In this picture, me see that the little boy welcoming his father after winning the World War, and people are celebrating the victory. There are the little boy and his grandfather waiting for him. Okay. Sir, it is half only story. It's only half, not a full. And the title which is given to the story, it is nice, celebration after World War. But Sir, this is victory one showing thing. Yes, sir. victory. That image was also in kind of that 19th century like that. Okay, yes. But which he indicated is that in the as a victory means celebration when they win the World War. This not should be written in the story, because whenever we lose someone, we are not have to laugh on that. Okay. Okay. All of you Yes, sir. understanding? Yes, sir. We have to appreciate if he is our enemy or whatever, because we have to show our kindness to others. But story title is very nice. Celebration after World War means coming to home, and I think I thought that through the action about the story that that policeman which is able to see in that story, that was coming from the any fighting through any border situation, and he's coming from there from World War region, and he's coming back to their house, and their family members are celebrating that that person is alive, and that is the most precious thing for them. I just thinking that through this action, that's why I introduced this story should be nice. But when I read between them, two lines I not like, and no one have to indicate this kind of a thing in an NDA exam. Okay. Yes, sir. Okay, next one. Title was nice, but as per my point of view, okay. As like the Lord Ram, when he came his house returned back, that time celebration people celebrated because he is alive and he was came back. Okay. Silent was not in the session. No worry. Otherwise, he will represent it with another point of view. He can cross me also, but he is not in the session. Okay. In every point, one thing all of you have to be should notice that in each and every point we can prove at if something is wrong, then we can prove is as a right by our knowledge, through our knowledge. Okay. And it is a good ability when you are facing some interview. Okay, next Okay, one. sir. Might be if he was in the session, then he can defeat. But okay, Kalyan. Kalyan, are you in the session? Yes, sir. Kalyan Sonone. Okay, go ahead. So my story's title name is Importance of Discipline. Oh. So in this above story, there is a police inspector and a small boy on the bus stop. The inspector is making the people to stand in the line, and the small boy wants to go and stand in the line, but he is not standing in the line in a straight line. The inspector is telling him to stand in the straight line properly, but he is not. Then he again told him to stand in straight line and given him the importance of discipline. In while going in a community or the society, we should be in discipline and stand in the line and to follow the rules. The boy get a good knowledge of it, and he is standing in a straight line. Your story is good, really good, Kalyan. Which I think that from that story means it's my story too. It was my story too. Once first that time I
seen that image. But I think you use the word limit less than 80. 82. 82? Yes. Okay, I Yes, am sir. not calculated. Okay, it's more than 80. Good then. Which I want to spoke about the story that is you wrote in that story. Okay. Okay. Thank you, sir. Importance of discipline should be must. Okay. Who want to see the paper? No one. Sir, match paper. In the evening at 8 p.m. Story. Okay. सर हमारा कौन सा पेपर है? Physics. ठीक है सर. कितने मार्क्स का है सर? Shardul, I will send that full details of that paper on WhatsApp. Okay sir. Okay sir. Nukul, I found your story. Sorry, that is in the text format. That's why I'm not able to understand where is it. Nukul, go ahead. Hello. Nakul. Nakul. Hello. Yes, sir. Go ahead. Faith and confidence. It's not a topic. Okay. In USA, there was a carnivore at that time. All people was gathered at the carnivore place. People were enjoying the carnival. At that time, lots of children were playing. At that, the police was seeing the cute children, and he remembered his childhood memories. At the same time, he saw a child crying something. Then he moved towards him. Then the child was trying to say something to the policeman. There was a lots of crowd. Then the policeman realized that he want to cross a road. Then the policeman helped him to cross. Okay, good story. It's similar to that discipline, but it's also good. Faith and confidence. How Sir, can I like his story, sir. Yeah, I too. Faith and confidence. What do you mean in that story? Can you explain it in short? Shazul, where is your story then? I want to like your story too. Shazul. Okay. Hello, Nakul. Nakul. Yes, sir. Tell me about that action which you means title, faith and confidence. In a short, how you are able to locate in your story that statement, faith and confidence. We can observe that the policeman was saying and the children at that time we can just I have think children has faith in the policeman that he and the confidence that he could help me to pass he may help me to cross the road. So I have used this title. Hello. Yes. Okay, I got that. Your voice was low, but I heard that which you spoke. Okay, Nakul. Yes, sir. But Nakul, you're not right in the actual format which I have provided. Which, sir? I already provided a format on the WhatsApp, and I've already shown in the session too. So I have joined late. Okay. I am new.
Okay, Nakul. But it's appreciation you sent and you wrote a story with the faith and confidence. Your confidence is located by a child, and faith is shown by the officer that yes, sir, that person who helping that child. Okay. Now who is remaining? Yash. Hello. Preeti. Hello. Yes, sir. You have a story? No, sir. Okay. Yash. Yash. Okay, Yash not. I think he's not in the session. By attending, like he's attending the session, but he's not properly in the presence of mind. Kuntal. Actually, I'm not able to compare whose story is best because all stories are good, except some negative thoughts who wrote that. But I don't want to I don't want to do that. All are all the students are written the story, and that's our best. They are showing their efficiency. It is the right to. It is the right thing which they did. Means your presentation should be must. Whatever you are writing, it's help you to learn. Kuntal Mali, hello. Kuntal Mali, experience is the best teacher for everyone. Sometime I have shown some negative thoughts which not should be in the story. All are good. Some of the thoughts are wrong. I explain that. I explain them all in front of you so that you can get the positive point of view. What are the rights and what are the wrong in the stories. Some students are messaging me in the chat box. That's why I'm answering. Kuntal. Kuntal, hello. Ritesh, he will angry on you once he visited the campus. Shardul, share your story. Someone want to hear your story. Shardul. You can tell directly to him. Don't message me if you want to see his story. Aryan Ingre, he's also your senior, and he wrote his story in the very fast way. I got the message from him too. At the time of when 4 minutes over, but I think he is not in the session right now. Okay, we will read his story too. There are two male characters. One's age is 23, and another one's age is 5 years old. Action is helping man. It is also in the short. It's a good helping man. Story. Aryan Ingre, he is also of your senior. Story is that once upon a time, what that? There was. Okay. There was a man. There was a man who was very helpful And kind-hearted. and kind-hearted. Okay. And genius. He was a man who will help someone without asking anything to pay him.
he will help someone because he wants to what that and he loves to one day while washing into Walking. okay. I'm not understanding the writing actually. I think it's the walking into the thirsty road. I think so. Okay, okay. A helping man, but he used the word pay, and pay word should not be used. Not should be used. Should not be used. Yeah, but he's explaining that also not should be used. He's not he's not getting any payment from there. Without any payment, he trying to help. Okay. He wrote the story in a not more than 80 words, less than 80. But he wrote, it is a good. This is the thought is good. Whenever someone wrote the story, that thought is good. And that is for come in the appreciation way. Okay, who is remaining in the session? All are over. Hello. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Shardul, you are not. Come in the campus. I will see you, Shardul. You have to write here story. Okay. Sorry, I am just joking, Shardul. It's okay, sir. Okay. Wanted to convey any message to your juniors? Shardul, Ritesh. There are 2 students in this. Okay, Ritesh also went. Only Shardul in the session. Sir, these are all juniors. Not all are. Sir, Vaibhav is in 12th, no? Vaibhav Bhusare. Vaibhav Ingre is your classmate. Vaibhav Bhusare is your junior. He will He's be junior? your junior. Yeah, he will be your junior in the campus. तर म्हणजे आता कोणच नाही का सिनियर की तर कोणच नाही इथं फक्त मी सोडून हा आपल्या कॅम्पसचा तू एकटा आहे सर्व पळाले. बरोबर. कोण झालं होतं जॉईन फक्त काय रितेश मी तनिष अजून 2-3 झाले असतील. आर्यन बाकी आहे चंदू है की नाही. हो तनिषची बाकी होती. तनिषची स्टोरी बाकी आहे. त्यानं काय लिहिलं असेल काय माहित नाही सर. ओके. अहो ते हँडरायटिंग मुळे वेळ जातो त्यांचं ते हँडरायटिंग काढत बसतात चांगली त्याच्यामुळं. ओके हँडरायटिंग बघा बरं का त्याची भारी आहे. याच्यामुळे वेळ गेला 4 मिनिटं कुठं कसे गेले कळालंच नाही. ओके. तनिष विदास अहिरे he used 3 character. Naughty child. Naughty child. Okay. He's showing his own image in that I think story. He's trying to show his own image. Male is a 30-year-old and a boy whose age is 5 and another one man 32. Sir, there are only 2 characters in the Because story. they are I think beside near of that child side of that child there are senior citizens also are there. मग सर तिथे एकच थोडे होते ते नाही पण Several are मेन there. कॅरेक्टर 2च होते ना. But I think he is thinking about that 2 characters na. That character. 2च त्यांचं लिहिलं पाहिजे नव्हतं त्यांनी तिसरा कशाला आणला मध्ये. No, he can think na about the 3rd character by his imagination. And what is his imagination? I don't know. We don't know. We have to write the story for that. We have to read the story for that. बर. This is a story of a father and a boy going to market for trying some vegetables. Buying some vegetables. Buying some vegetables while
returning from the market. at the bus stop when they were waiting for their bus to arrive for going home. The little child started crying. The father asked the child that why was Was he crying? was he crying. The child The child wiping his tear told his dad that he wanted chocolates. Okay, and the father rejected his demand and started explaining him that chocolates are bad for teeth. While this was taking place, the man on the footpath near them started looking at them and thought that the father was so Cruel. cruel sir. म्हणजे to danger. Hello, sir. So cruel to his child that he can't give him a chocolate. Okay. Yes. Hello, sir. Yes, Vaibhav. Sir, ऑफलाईन क्लासेस चालू झाले, ऑनलाईन क्लासेस बंद होऊन जाणार आहे का? ऑफलाइन ही चलेने वाला है कैंपस, जल्द से जल्द खुल जाएगा कैंपस। आप लोगों का लेक्चर्स में सेशंस में आप लोगों का प्रेशर रिक्वायर्ड है। ओके सर। ओके, आयुष श्रीवास्तव, he got 50 marks for story writing, 5 marks extra for showing his story with the positive way, with the proving his about of his story. Rameshwar, he got 45 marks on his story. I think he missed his action or a title on that story, and he is not able to write in more than 80 words. That's why he got a 45 marks on the story and 5 marks extra for good story. Total 50 marks he achieved. Rishikesh Tupe, he got a 55 marks, means 50 marks on the story, complete 50 marks, and 5 marks extra on the writing in a good way. Vaibhav Busare got 50 marks on the story and 5 marks on the writing in a good way, good manner, showing about the attitude good. Total overall 55 marks, both Rishikesh Tupe and Vaibhav Busare. And then Nakul also had a actually he does not have a format. That's not was his mistake, but he write a good story. That's why he getting 5 marks and 45 marks because he does not have a proper format which require for NDA. But he used more than 80 words might be because I am able to see that in one line there are 15 to 16 words. Okay, total over 50 score you get. Score never creates problem if anyone thinking that. Whatever you are writing and you facing the situation like a story writing and you are proving yourself you can, then this is the good thing for everyone. Ritesh Takawale, he got a 50 marks and 5 marks on the positively story, positiveness showing in the story. Total 55 marks he also achieved. Manish Aire, he also writes same thing, means 50 marks for the story writing. He wrote more than 50 words, sorry, more than 80 words, and he used positivity through the story. That's why overall 55 marks he got. Sahil Naik, I don't want to tell, but he got 45 marks, not more than, because one negative thought I got from the story. All of you know that, but he wrote that story. I like action, not the story. If I imagine the action with the another story, then I like the action. That's why he is getting 45 marks and not representing it with the positiveness. That's why he's not getting more 5 marks. Total overall 45 marks he scored. Kalyan Sonone, he's also scored 50 marks because he used whole proper writing. He wrote whole story more than 80 words in the more than 80 words in the standard format, and 5 marks for the showing positivity, means proper way in the story. And Aryan Ingre, he's your senior. He wrote the story in the short, but he still get the 45 marks because he is not write a story in the full way.
more than 80 words and not follow any standard format. But he is not here for explaining it with the positivity. That's why he's not getting any extra marks from me. He's still on 45. Okay. सर Yes. सर मुझे किधर इम्प्रूव करना चाहिए वो बताओ ना। आपकी स्टोरी देख के बता पाऊंगा, स्टोरी देखना पड़ेगी। हाँ चलेगा, व्हाट्सएप पर होगी सर मेरा। ओके, आपको पर्सनली बता, वैसे मैं बताना चाहता हूँ स्टोरी सभी की अच्छी थी। स्टोरी लिखना वो बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने मन से डेयरिंग करके स्टोरी लिखा वही बेस्ट है, क्योंकि जो अगर जो सामना करने की हिम्मत रखते हैं वही हमेशा सक्सेस पाते हैं। ओके, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस ही आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना बेटर है। जितना आप आपने स्टोरी लिखी, आपको एक्सपीरियंस आया, जो जिनके लिए न्यू था उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन स्टोरी में क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी, मीन्स किसी की हेल्प होना या कुछ होना, किसी के बारे में अच्छे सोचना, किसी को सीख देना, इस तरह से अच्छी चीज़ें जो सब उभर के आए बाहर, वही बढ़िया स्टोरी रहती है। तो पॉजिटिविटी के हिसाब से, और साथ में जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल शॉर्ट में कोशिश करें कि 2 वर्ड में टाइटल फिनिश हो जाए, एक्शन, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स। कभी कभी स्टोरी बहुत अच्छी होती है तो उसको 2 वर्ड से भी ज़्यादा लोकेट किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 2 वर्ड्स में उसका टाइटल फिनिश हो जाए, एक्शन। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा टाइटल रॉन्ग था या करेक्ट था? टाइटल क्या था आपके स्टोरी का, मुझे याद नहीं है। एक मिनट सर, मेरा टाइटल था साइलेंस इन न्यू सिचुएशन। साइलेंस इन न्यू सिचुएशन, ओके। तो साइलेंस से आपने शो किया है क्या? मैंने साइलेंस शो किया है कि वो बच्चा रोने लगा था, उसके बाद में वो थोड़ा शांत बैठा, फिर एक ऑफिसर आया, उसके बाद में उस लड़के को उसके पेरेंट्स के पास भेजा दिया। वो लड़का उसके पेरेंट्स के पास गया और वो हैप्पी फैमिली हो गई वो ओके, चारों। उसमें वो साइलेंस हो गया, वो शांत हो गया। हाँ ओके, ये भी अच्छा है, उसने बट ज्यादा उसने ज्यादा दंगा नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स मतलब मैं लॉस्ट हो गया, वैसा उसने चिल्लाया नहीं उस सोसाइटी में। शांति से काम लिया उसने, उस बच्चे ने। वो ठीक है, बट शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हेल्प हो रही है ना उस बच्चे की वहाँ पे। ओके, यस सर। तो हेल्पिंग इज अ गुड थिंग। आप उसको 1 एक्शन में भी अगर सुलटा सकते थे, 1 वर्ड में हेल्पिंग होता। अगर 2 वर्ड की बात होती तो गुड ऑफिसर, काइंड ऑफिसर, हेल्पफुल ऑफिसर। सर हेल्पिंग हैंड भी होता ना? हाँ, हेल्पिंग हैंड बोल सकते हो, बट स्टोरी में जो दिख क्या रहा है वही आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ओसी का आपको शॉर्ट में सार लिखना है, एक्शन लिखना है, टाइटल लिखना है। अभी हेल्पिंग हैंड आपने अगर बोल रहे हो तो स्टोरी उस हिसाब से होना चाहिए। ऑफिसर ने अपना हाथ उस बच्चे को हेल्प करने के लिए बढ़ाया, वो इस साइड से आपका उसमें वे होना चाहिए था, तो हेल्पिंग हैंड आप उसमें लिख सकते थे टाइटल। स्टोरी पे डिपेंड करता है, स्टोरी आपने किस वे में लिखी है। ओके, यस सर। Can you tell the default in my story also? What is the action for your story? What is the story? You can tell me in the short. Importance of discipline. Importance of discipline. Okay, actually that was, I also think that which when I see that image as a first discipline, about the discipline, you are showing that with the discipline in your story, that's why your title is a discipline. But I am thinking that the story, that officer is helping that child to go on the footpath, don't stand on the road, otherwise a vehicle will come, or some parade, or some really julus that are going on that road, they can damage that child or provide any injury to that child. So that I think that title of that story should be helping nature of the officer, helping nature, this kind of.
but you are showing telling about the discipline in the story. That's why discipline as a title you wrote, that is good. I'm not telling anything, because at the time of screening, when you are in NDA, that time once you wrote your story, then after that you have to go in front of the one officer that will ask from you about read your story. Then you have to read, and then you have to tell the you can tell the title of the story, action of the story first. Then once you completed your story, and then you have to prove your title through that story. Then you are getting the much more marks, because once you read the title and what is the thing, what that officer thinking about of that story, that is matter. Once you wrote the title and you when your turn come, that time you just reading your title, then you're reading your story. Once your story gets over, then you have to go again on your title by showing that you are proving your title through that story, because you have to deny thought of that officer, because that officer have a different thought in his mind, because he is also thinking about that picture. Okay. Yes, sir. Yes, Can sir. we be, sir, while explaining the story orally, can we elaborate it rather than given in the written way? Yes, you have to elaborate it in short also in front of the officers. Okay, sir. Thank you. But you have to giving in the written form. First you have to write. Then the second process is After giving screening. in written form, while explaining orally, we can read. That was my question. Actually, I'm not able to hear voice properly, and due to noise issue, or your voice is low. Can you? Excuse me, sir. Yes. सर आप भी आस्था ऑनलाइन हो और एक जन भी आस्था ऑनलाइन. एक्चुअली वो मेरा सेकंड डिवाइस है, उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया है, स्क्रीन शेयर किया है. और फिर हाँ समझ में आया. ओके. Kalyan, raise your question again. Yes, sir. I was asking that after giving the written, while officer will ask our orally that what we have written in the story, then while telling the orally the story, we can elaborate it or not, or we have to tell the story that we have written in the written form. No, once sir. you have to, once if that is a condition depends on that time when you are in front of the officer. Sometimes officers are telling that read your story, and at the time of reading you are just trying to explain that story in the means you have to read that story in the manner by the step by step statement by statement, means by making commas and several things, dot, by putting imagination dots, comma, because whenever you're writing a story in the fast way, because you have less time, that's what that time you are not putting that such kind of a thing. You have to use that all the things narrations at the time of explaining, elaborating your story in front of the officer. Sometimes your story are near of the officer, you're not getting that, you have to tell from your own. He just wanted to test what you wrote, and you are able to tell about of your story without of seeing it. You just have to explain in a short, elaborative. That is depend on the condition, Kalyan. Excuse me, sir. Okay, sir. सर अगर ऑफिसर ने हमें स्टोरी बोलने को कहा और हमने जो स्टोरी पेज पर लिखी हो और वो ऑफिसर के पास हो पेज, हाँ वो नहीं पढ़ रहे और दूसरा ही कुछ बोल रहे, पर स्टोरी सेम है सर, फिर उस वक्त चलेगा या नहीं? रिजेक्ट होने के, क्योंकि उस टाइम पे कतार में बहुत सारे बच्चे रहते हैं. यस सर. अगर उसको स्टोरी अगर पसंद आ रही है, शॉर्ट में आपने अगर कुछ और बोल रहे हो, उसको पसंद आ रही है, तो बात अलग होती है. अगर उसमें अगर जैसे एक ने मेरा थॉट जो था, डिसिप्लिन वाले ने जिसने स्टोरी लिखी, एक बार बच्चा था कोई तभी जिसने मेरी इमेजिनेशन को उसमें लिखा है, तो मेरा चांसेस है उसको पास करने का. ऐसा हो सकता है रेयर कंडीशंस में. ओके. यस. Anyone?
हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर कैंपस 16 को एकदम 100% चालू हो रहा है क्या? 16 को चालू हो रहा है और उसका पूरे क्वेश्चंस के प्रॉपर वे से आंसर आपको शिंदे सर दे सकते हैं। पर 100% चालू हो रहा है क्या? मेरे पास तो नोटिस आया है 100% चालू हो रहा है, सर के पास से। हाँ ओके सर। सीनियर्स भी आ रहे हैं उसी दिन। नहीं सर, 11 के बच्चे आने के बाद हम आएंगे। नहीं, आप लोगों को, आप लोग भी आ रहे हैं ना उस दिन, क्योंकि आप लोगों का सामान जो है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करना है। आप लोगों के रूम आप लोगों को खाली करने हैं उनके लिए, जूनियर्स के लिए। हाँ सर, आप मुकेश सर को बोल के बेड ऊपर शिफ्ट कर दो हमारे। ओके सर मला विचारायचं होतं, ते काय झालं ते रत्नदीपचं काय झालं सर? I will tell you about him after the one session get over. Through call you can communicate with me about that. बरं सर, राहू दे मग, नंतर आता तिकडे आल्यावर बघू ते. हो. Anyone have any query related to picture perception? Hello. No sir. Okay. No sir. Okay. I told Max I will not display on the group. And best of luck for your paper, evening paper. And in evening I will declare a schedule also for the campus visit. Might be it from 6 PM to 7 PM in the evening. I will show the campus here. इव्हनिंग टेस्ट विल इव्हनिंग टेस्ट जे पिक्स असतील ते तुमच्याच व्हॉट्सअपवर सेंड करायचे की स्पेसिफिक क्लास टीचर जे I will share a link on a group. You have to just fill the MCQs online. Okay sir, okay. Yes sir. Okay. I got some images from your sir. I have to convert it in the paper. Okay, bye. सर 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 Yes. सर, ते थोडं लेक्चरचं टायमिंगचं करा ना आमची शिफ्टिंग. तुमचे लेक्चर सर्वात जास्ती आहे, चांगलं आहे ना. अहो सर, ते टायमिंग थोडं चेंज करा ना, 10 ते 11च्या पण याच्यामध्ये घ्या एक. 10 ते 11 एक तासाचा ब्रेक तुमच्या मॅथ्स रमेश सरांचं होऊन जातं त्याच्यामध्ये. ऍक्च्युली सरांना त्या टायमाला वेळ नाहीत ना. अहो सर, मग आता काय बघतो मी काय करतो, उद्यापासूनचं टाइम टेबल थोडं चेंजेस होणार आहे ना, उद्याचं टाइम टेबल बघतो ऍडजस्ट करायला. नाही सर, करा पण. कोणचा आहे? हॅलो, हा वैभव सर, आमचा बायोलॉजीचा ऐवजी कोणचा आहे उद्या? केमिस्ट्री का फिजिक्स? केमिस्ट्री. ओके सर, 5च्या अगोदर बाकी सगळे लेक्चर होऊन जाऊ द्या फक्त आमचे. प्रयत्न करतो. हा सर, बघा बरं का, पण नक्की 5च्या अगोदर झाले पाहिजे सगळे. हा प्रयत्न करतो. Anyone of you want any question? Ask any question? No sir. Okay, then I am going to end the meeting. Today's session was very nice.